पहले तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि there was a video I was seeing of it's a things cool video by the way about SpaceX IPO, that how SpaceX, what you have to think before investing into SpaceX IPO. Like, is it I'll tell you. Let me open notebook and then let's see कि मतलब वो सिर्फ हमें हमारे से पैसा बर्बाद होगा उसमें, या फिर वो इफ वी हैड, तब उससे फायदा भी हो सकता है लोगों को। तो उसमें बेसिकली उसने ये बताया कि लोगों को फायदा होगा नहीं होगा, ये सिर्फ एक चीज पे बात टिकी है इसकी पूरी, द $200 नंबर। तो अभी पहले तो स्पेस एक्स को हमें हिस्ट्री स्टार्टिंग में फाउंडेशन समझना पड़ेगा कि वो चलती कैसे है। नाउ व्हाई द फक माय लैपटॉप इज नॉट वर्किंग, आई एम नॉट श्योर हाउ आई कैन सी कि सो फार क्या रिकॉर्डिंग हो रही है। माइक इज वर्किंग, ठीक है, ओके डन। ठीक है, तो पहले तो मैं ट्राई नोटबुक एलएम यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। गिव मी डिटेल ऑफ व्हाट वाज देयर इन द वीडियो, एड्रेस each um, okay, firstly I'll tell you the idea of these videos are is these things are just going to benefit me. So so it is just for my learning and my, because I want to increase, broaden my perspective over things, increase my knowledge, be more intellectual, all of that shit. And I just each and every point in view and choose the response and right. So इसमें हमारे ये आज की जो वीडियो ट्रांसक्रिप्ट एग्जाम है मैसिव स्पेसएक्स आईपीओ फ्रेमिंग इट as a high stake gamble on the future of orbital data center. हाँ, we'll talk about all of these things. It's going very good. बढ़िया बढ़िया चीजें बताता है। Elon Musk, Elon scariest. India's birth rate has fallen below replacement. Wow, ये भी देखते हैं। But next session will be of DPDP Act, जो भी इंडिया का DPDP Act आया। नेक्स्ट सेशन एक बार उस पर करेंगे बिकॉज मुझे ऑफिस में भी एनी वेज इसको पढ़ना ही है, क्योंकि हमारे ऑफिस में भी हम जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ देयर ऑल्सो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर मैं विश्वास ये कि तो ठीक है। तो मैं बताता हूँ, पहले मैंने वीडियो देख के क्या सुना कि अभी इलन मस्क he SpaceX not just one company. SpaceX is a combination of three companies. One, the first one is the rocket business, which is called Starship. Second one is the telecom business, which is called Starlink, and the third one is the XAI, जो X उस पर चलता है, right? Now, अब हर बिजनेस पे होता होता क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। स्टार्टिंग दिस इज रिगार्डिंग द SpaceX IPO की if someone had to invest in SpaceX IPO, तो what what उनको क्या क्या देखने हैं, गाने चला सकता है।
ठीक है, हमने क्या समझ लिया? हमने पहले ये समझ लिया कि स्पेसएक्स में है क्या। SpaceX अचीव इज, इट कुड बी द मोस्ट revolutionary company of your time। ठीक है ठीक है ठीक है, तो जो भी है। तो हमें, हमारे को ये है कि इसमें हमारे में ये समझा कि इफ हमें SpaceX की आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, तो द एंटायर थिंग of SpaceX IPO being successful or not depends on that reusable rocket technology. That अभी they are अभी for anything to bring from uh, ground to space, it requires around $2,700 per kg, even with the reusable rocket technology. But Elon Musk claimed that we are going to bring down that to 200 kilograms, $200 per kg. So that is around 90% drop. So how this is going to uh, help us decide that हमें इलन मस्क के इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो हम देख लेते हैं, राइट। पहले तो रेवोल्यूशन देख लेते हैं, रॉकेट इकोनॉमिक्स हॉरिजॉन्टली लॉन्चिंग अ सैटेलाइट कॉस्ट। ठीक है, हाँ। तो यही था कि इलन मस्क के पास, इलन मस्क हैड $100 million फ्रॉम पेपाल, then he left PayPal to build SpaceX. Now people were amazed, like, or they were also like they were like Elon Musk was acting like a freak. Then people were kind of calling him mad or stupid or very delusional to do that, to make that move, because ideally एक रॉकेट बनने में it requires 50 million to 400 million dollars. Now Elon Musk realized that, but Elon Musk $100 million पेपाल से निकाल के लेके जा रहा है। तो उसको क्या गैप दिखाई थी स्पेस इंडस्ट्री में, जो he thinks he would be able to target that gap and make something out of it, right? So पहले तो Elon Musk realized the raw material of the, ठीक है, तो 50 से 400 मिलियन रॉकेट लॉन्च करने में पहले तो 8% को $8 बिलियन तो उसमें रॉकेट के रॉ मटेरियल्स में जाता है। और $8 बिलियन कितना है? 2% है पूरे टोटल लॉन्च प्राइस का, राइट। अगर हम अगर हम 400 मिलियन ही पकड़ के जा रहे हैं, तो 400 मिलियन का 2% 8 मिलियन है। तो अगर $400 मिलियन एक रॉकेट के लॉन्च में चला रहा है, सिर्फ 2% का उसका रॉ मटेरियल आ रहा है, बाकी सारे 98% पैसा कहाँ जा रहा है? वो लॉन्चिंग में ही जा रहा है, राइट। तो वो कैसे टारगेट हो सकता है, वो उसको कैसे कम कर सकते हैं? तो इलन मस्क फोकस ऑन दैट। The primary reason of the extreme was cost was the traditional aerospace companies discarded the entire rocket after single use, right। अब यही हो रहा है ना कि एक रॉकेट ऊपर गया एंड बिकॉज इट इज नॉट रीयूजेबल, पहले जब back then Elon Musk started that company, these rockets were not usable, right। Before going to three businesses, हम पहले ये जान सकते हैं, take me back to the rocket prices in detail, like how it gets 2%, how rest of it is 98%, Elon targeted what part of it will faculty and what part starship।
But Elon actually ideally have he have four companies, right? So he is also Elon have already actually Elon have two four companies. Nice. Can I please can I pin myself? मैं यहाँ हूँ. This is a camera, no? Why the fuck I'm saying this? ठीक है. तो हम कहाँ पे थे? ठीक है. तो हम थे कि to understand exactly what SpaceX targeted. Uh, ठीक है, launching satellite 50 से 400 million था, that is fine. Elon Musk analyzed this post. He discovered a massive inefficiency in aerospace economics. The actual raw material required to build a rocket accounted for just 2% of the total cost. So roughly 8 million, right? The remaining 98% of the massive price tag existed simply because traditional aerospace companies treated rocket as single use disposable items. ठीक है, सिंगल यूज था वो. ओके. तो वो बना के 98%. अच्छा, थ्री बाकी का 392 million वेस्ट जा रहा था क्योंकि वो वापस यूज ही नहीं होता था. डंप कर देते थे तो सारे पूरा रॉकेट. ठीक है, तो डंप कर देते थे. ओके, इंटरेस्टिंग. So after spending tens of millions of dollars to build these highly complex machines, companies would let the entire structure burn up in Earth's atmosphere or crash into ocean after just one flight. ठीक है. To understand exactly how SpaceX targeted this remaining 98% to bring price down, ये हमें समझना है. ठीक है. ठीक है, पहले हम पढ़ के समझते हैं कि 60 से 80 मिलियन वाले जो रॉकेट्स होते हैं, क्योंकि हमने देखा 50 से 400 मिलियन में रॉकेट बनते हैं, तो 60 से 80 मिलियन डॉलर्स में वो रॉकेट्स विच आर मेड. हाउ आर द स्टेजेस? द फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, द पेलोड फेयरिंग. फर्स्ट स्टेज इज द बेस. बेस कंटेन्स प्राइमरी इंजन होता है जो पावर अप करता है fuel को, तो उसके अंदर फ्यूल होता है. दो चीजें होती है, मैसिव फ्यूल टैंक्स. एंड अगर इफ द रॉकेट प्राइस इज 60 to 80 मिलियन, लेट्स से 60 मिलियन, तो 30 मिलियन तो इसी में जा रहा है. ठीक है. देन द सेकंड स्टेज जो कि 15 मिलियन का कुछ होता है. ठीक है. Now, this section is equipped with smaller engines, avionic navigation systems to safely deliver the payload into final orbit. ठीक है. ठीक है, क्योंकि इस सेकंड स्टेज के ऊपर ही पेलोड होता है जो नेविगेट करेगा स्पेस में, विच हैज आल्सो आई थिंक कुछ कंट्रोल के लिए उसमें जो भी होता है, तो वो नेविगेट करेगा. दैट इज 10 to 15 मिलियन. ठीक है. दिस इज द प्रोटेक्टिव शेल पेलोड फेयरिंग. दिस अ प्रोटेक्टिव शेल ऑन द नोज ऑफ द रॉकेट. ठीक है, उसके ऊपर पेलोड है.
पेलोड के ऊपर कुछ नोज है ताकि वो प्रोटेक्ट करे। ठीक है ठीक है ठीक है, डन 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 डन। तो ये प्रोटेक्टिव शेल है नोज के that shield satellite and cargo from intense forces and vibration during the war. It is cost around 6 to 8. A Falcon 9 targeted partial reusability. You can note this point now. See, the Falcon 9 targeted partial reusability, but uh, जो आगे स्पाइस जेट बनाएंगे, ये तो स्पाइस जेट ही है ना, आई थिंक नहीं स्पाइस जेट बोल रहा हूँ, what the hell, स्पेस स्पेस जेट, what the hell क्या था वो, स्टारशिप, हाँ। तो अगर स्टारशिप बनेगी, दैट इंक्लूड फुल रियूजेबिलिटी। तो अभी देखना इसमें क्या होगा। हाँ, ठीक। तो इसने क्या किया, अब ये क्या कर रहा था फैल्कन 9, फर्स्ट स्टेज और पेलोड फेयरिंग, ये वापस रीयूजेबल रिप्लेसेबल थे। बट सेकंड स्टेज जो जिसपे हमारे 15 में कुछ लग रहे हैं, दैट वाज डिस्ट्रॉयड, नहीं लिखा होगा। फैल्कन 9 is not perfectly efficient SpaceX because it stays high in orbit, burns up upon the atmosphere re-entry. This means that even Falcon 9 throws away roughly around 20% of its physical hardware every time it launches. Yet, simply by recovering the first stage and the fairing, SpaceX was able to reduce launch X by 85%. Of course, of course, of course. 15 मिलियन या 10 मिलियन हमारा वापस भी हुआ, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट अगर हम देखें, तो वो अराउंड 85% कम कर दी थी फैल्कन 9 ने भी। नाउ हाउ स्टारशिप टारगेट 100% यूटिलिटी। अब स्टारशिप ने एक टाइप से एरोप्लेन जो होते हैं ना, वैसे ही बना दिया। फ्लाइट लो, वैसी की वैसी फ्लाइट वापस आ गई, पूरा 100% रियूजेबिलिटी थी। To conquer the final frontier of rocket economics and reach the promised 200 $200 per kilogram target, SpaceX is pouring $3 billion a year into Starship. Starship is designed to specifically target remaining 20% hardware। स्टारशिप का पहला जो था ना, पहला सक्सेसफुल टेस्ट, that was on October 2024. So you must have seen those clips. It is actually very famous, by the way. Uh, the clips where it does, Falcon 9 had legs to land, right? But Starship Starship just uses the thruster, what do we call it? That whatever we call that thruster to land, and it is being cast by another machine, sort of. Super heavy booster charges simply have super heavy booster. Instead of landing on mechanical legs of Falcon 9, these massive forces fall back into sky, coordinated by giant metal chopsticks. Wow, Taylor Swift. Ship second stage. Unlike the Falcon 9 disposable second stage, Starship second stage is built to survive entry and return on Earth and be caught so it can be refueled or be vegan. And also Starship का एक बढ़िया चीज है कि it can carry 6 times the cargo of Falcon 9। तो पहले मान लो हमें 1000 किलो भेजने के लिए एक, अगर हमें 6000 किलो भेजना है, तो हमें 6 बार भेजना है Falcon 9। स्टारशिप को एक बार ही में कर देगा, एक टाइप से आपकी कॉस्ट भी कम। तो only recurring cost क्या बचा, सिर्फ cheap methane fuel। Starship uses methane fuel, that is also, and it is around, I think, $1 to $2 million to stop or launch, हाँ। So by entirely eliminating the need to rebuild hardware for every mission, SpaceX aimed to drop total cost of launch from $100 million to $10 million। That is fucking like a 90% drop of prices. This is absolute reasonable 93% drop in prices because required to hit
My question to them is, Starship already, why don't I have open swap? इसको show भी नहीं होगा मेरे पास. इस पर फ्लो टेंशन ही कर लूंगा. टाइम नहीं.
Get back to work. It's time, like, hello, hello, हेलो. हाँ भाई, पता है भाई. हाँ ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे. ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या था? पूछ रहे. व्हाट वाज माय क्वेश्चन? हाँ, my question was, okay, so here my question is that if Starship has already uh, like made a prototype of sort of like a rocket and was already tested, it was Starship, right, which was successful in October 2024. So why is there a question of bringing this 93% drop still when the SpaceX IPO is about to be? Like my question here is that because everyone is betting on that on Elon Musk of if he would be able to bring that cost from $2,300 per kg to 200 per kg, $200 per kg, right? But if what are the things which are still left to do that? Because based on my knowledge, Starship already have been gone from a successful demo in October 2024. पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया. Can't do an entire screen recording in OBS. Can you start watching now? I just left this meeting.
ठीक है, तो हम काम कर लेते हैं। हाँ, तो ये बोला कि स्पेसएक्स ने सक्सेसफुली कैच कर लिया एक सुपर हैवी पोस्टर media with a giant metal chopstick in 2024, but proving that physical engineering of the system, there is massive difference between a successful prototype test and achieving the actual economic target of 200 kilo. ठीक है। अच्छा, बस वो। अच्छा, ओके। अच्छा, जो लॉन्च करा था वो भी 2,1700 किल पर किलोग्राम ही हो पाया था। टू ट्रांसफॉर्म दैट अक्टूबर 2022 टाइप टू जस्टिफाई SpaceX still have to include several critical scaling and operational matter to turn the system into everyday reality. Here is what left to do to achieve that. अच्छा, क्या एयरप्लेन लाइक रैपिड यूजिबिलिटी हो सकती है? क्या पता 2 बार में यूज होके फट जाए, 3 बार यूज होके फट जाए वो रॉकेट, क्या हो? नॉट श्योर। सिर्फ रिफ्यूल करते रहो और वो यूज होता रहेगा क्या बार बार? तो दैट इज स्टिल अ क्वेश्चन, राइट? कि उसको अब ये भी है कि हाउ मच मेंटेनेंस डज इट रिक्वायर एवरी टाइम वी आर सेंडिंग इट टू द स्पेस? अब दैट मेंटेनेंस कॉस्ट शुड बी आल्सो मिनिमल, राइट? दैट्स व्हाई इट इज यूजेबल, वरना 3 पैसे लगने को क्या? Then this is consistent and reliable high volume flights. That is also correct because Starship is expected to have a 6 times payload than Falcon 9. But it is possible that the first flight maybe Starship is able to do that. But but by seventh, eighth, or 10th flight, maybe that number goes down. So so is it? It should be a consistent high volume flights. I think that is what I'm getting. 90% drop can overnight was one product. Repeated massive into exactly. Not developing unproven payload technology at scale. What is this? The overarching reason of 200 kilogram metric is so vital to the IPO's plan launch orbital AI data. I think it is a gamble. Because to actually make as well as SpaceX invest connect is a gamble. To actually make this profitable and justify the business model, SpaceX needs to be able to launch extremely heavy equipment specific to massive 100-ton radiators required to cool 1 megawatt space data center. Nobody has ever launched 100-ton radiator at scale. हाँ, ये भी हम बात टेस्ट की। चलो ऊपर चलते हैं। हाँ, बोलोगे कि हाँ कि 3 कंपनीज है इसके पास। रॉकेट बिजनेस हमने बहुत डिस्कस करी है उसके बारे में ऑलरेडी। देन वी हैव स्टारलिंक व्हिच इज द कैश मशीन। नाउ स्टारलिंक अब अब स्टारलिंक is running at a 63% EBITDA. मतलब Amazon, which is one of the biggest company, जो and AWS, which is one of the biggest, which is known and जो सबसे बड़ा टेक इन्वेंशन माना जाता है, that is also running in the 50% EBITDA margin. But here comes Starlink, which have hundreds of satellites throughout the world in the Earth's orbit. Uh, that is running. Okay, they have 8,400 satellites. That is actually a massive number, and is running in 63% EBITDA margin. AWS also runs in 50%, and that is basically Starlink. अब ये है कि Starship is losing money. XAI is burning money. Where that money is coming from? Starlink. Starlink is funding, but basically one company is funding these both of them. Up, I'm not sure how. Like this should be an architecture of a company like this, that is also a question here. Like such big companies should have this dependencies on each of them. That is also a question. Which
can have a separate discussion, very long discussion. XAI, SpaceX recently absorbed XAI, right? But XAI, maybe there is a you kind of not a loophole, but it is like something which doesn't seem obvious, right? Like OpenAI, I have I think $38 billion revenue, right? And it is valued at 32 times of its revenue. Anthropic is valued at 13 times of its revenue, right? But XAI, it is it is not reportedly, it is uh, its valuation represent massive 78x times of its revenue, which is drastically very higher than the Anthropic and OpenAI, right? It is also written in. So it have a $250 billion revenue with the 3.2 billion dollar in revenue. So that is questionable. Like, why is that? And now here comes the AI data center crisis on Earth. I'll tell you why it is valuable, right? Now, who care? In 2010, there was two zettabytes of data, which is, I think, I'm not sure, zettabyte is trillion, how many trillion? I'm not sure. But there was 2 zettabyte of whole data in the earth. Now we now comes after that comes AI into the picture, artificial intelligence, and a lot of things. So by 2026, now it is 221 zettabytes, which is a 100% jump in the data over time, right? Now it's like every month there is an increase of 2 to 4 zettabyte of data. And back then in 2010, 2 zettabyte was the whole world's uh, storage, right? Now processing, yep. Now it now it is already everybody knows that how much data is increasing day by day, day by day. It also need to be stored somewhere, and it is also reportedly a what do you say? As अनुमान को यूज कर ले अनुमान predict होता है. So now it is also predicted that it would increase around 4 or 5 times more than this in next few years. So now, firstly, जो भी 221 zettabyte data पड़ा है, we should be able to store that, which we are doing. But we should also be ready for the future. Now these data center are big data centers. So data centers में होता क्या? There is a like every time, for example, Geo example लेते हैं. Every time you click, let's say today is Rohit Sharma and Kohli playing, and you are very excited for the match. You go to Geo and you click that button, that um, that pause and play button, right? So when you when you click that button, that request goes to a load balancer. Now, what does load balancer do? Load balancer, if if you have read a little bit of system design, you would know that uh, load balancer एक सक्सेसफुली रिक्वेस्ट राउट कर देता है किसी एक सर्वर पे हॉटस्टार की जियो हॉटस्टार के डेटा सेंटर पे. अब कितनी रिक्वेस्टेस ऐसे आ रही होंगी तो जियो हॉटस्टार आल्सो नीड अ वेरी बिग डेटा सेंटर्स to able to store that data. Now, this is just example to understand how these data center work. Now, these data centers, इनको चाहिए क्या होता है? Firstly, एक डेटा सेंटर one data center require electricity worth of 100 thousands households.
तो 1 लाख घर की इलेक्ट्रिसिटी एक डेटा सेंटर खा, लीडिंग टू, अब इसमें यूएस में ऐसा होगा कि 40% रिपोर्टेडली इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस भी इंक्रीज हो गए हैं 2021 से, तो 2021 से ज्यादा एक्सपोनेंशियली डेटा इंक्रीज हो, डेटा सेंटर्स भी बढ़ रहे हैं। नाउ वाटर भी चाहिए उनको, ऑफ कोर्स कूलिंग कूलिंग, ये डेटा सेंटर को कूलिंग सिस्टम भी कोई चाहिए। तो 5,000 से 9,000 गैलन्स ऑफ वाटर एवरी सिंगल डे लगता है एक डेटा सेंटर को, एवरी सिंगल डे। इमेजिन कितना पानी लगा। लोकल वाटर सप्लाई विच इज स्ट्रेनिंग। नाउ Elon Musk and Jeff Bezos both, they have proposed the same solution कि हम बनाएंगे डेटा सेंटर स्पेस में। स्पेस में प्रॉब्लम बताता हूँ ठीक है। हाँ, स्पेस में टेम्परेचर इज -230 डिग्री टू 40 डिग्री, आई डोंट नो इतने सेल्सियस ही होता है। तो इट इज कूल, तो ऐसे कूलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई टेल यू क्या प्रॉब्लम है। वेन एवर वी लाइट अ मैच स्टिक ऑन अर्थ, हवा आती है, हीट एस्केप कर जाती है कहीं ना कहीं थ्रू एयर और थ्रू वाटर। इन अर्थ, और सॉरी इन स्पेस, इट इज अ कंप्लीट वैक्यूम। तो अगर मैं कोई स्पेसशिप दिखाऊं, लेट्स से ये हमारा डेटा सेंटर है। अब यहाँ पूरा वैक्यूम हो रखा है, तो ये डेटा सेंटर जितनी भी हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा, ये डेटा सेंटर जितनी भी हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा, नाउ स्पेस इज अ वैक्यूम, वहां हीट एस्केप ही नहीं कर सकती, एंड इट इज अ परफेक्ट इंसुलेटर। उसके लिए, हीट एस्केप करने के लिए वी वुड रिक्वायर्ड अ रेडिएटर। अब रेडिएटर में बैंड हो जाएगी मैं। हाँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, दैट वो अराउंड 75 किलोवाट्स हीट जनरेट करता है, ठीक है। एंड वहां पे जो रेडिएटर लगा हुआ है, आई टेल यू द हाउ मच वे दैट इट इज। एक 75 किलोवाट हीट के जो जनरेट कर रहा है, उसके लिए वी, आई थिंक इट रिक्वायर a ton of a radiator which weigh 1 ton, which is 1,000 kilos. Not sure what this number actually. यहाँ पे है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देखिए क्या, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रेडिएटर वे। नो, टोटल नहीं पूछा भाई मैंने। टेल मी इफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन generates a heat of 75 kilowatt, then how much ton of radiator I would need? Yeah, that would I know, 1,000 किलो का हमें radiator चाहिए होगा। अब यही सोचो कि ये हमारा डेटा सेंटर, डेटा सेंटर अराउंड, वो तो 10 टाइम्स मोर हीट जनरेट करता है, करेगा। तो हमें 10 टन, 10,000 किलो का रेडिएटर हम स्पेस में कैसे भेज सकते? वो कभी भी अभी, अगर अभी हम भेजना चाहें ना, हम भेज सकते हैं ऐसे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर हम भेजना चाहें अभी, तो इट वुड रिक्वायर 300 to 400 million dollars टू सेट अप वन डेटा सेंटर इन स्पेस। बट वही अगर हम डेटा सेंटर अभी ग्राउंड लैंड पे हम करें, तो दैट रिक्वायर्स अराउंड
I think 15 to 20 million dollars. But here is the catch. If Elon Musk brings down that cost of Consar around $2,700 per kg to $200 kg, then data center would be able to set up at around 25 to $50 million in space also, which is still higher than land, but it is in long run it is very useful because we are saving our natural resources like water and electricity. That is also required in Earth, right? So that is the catch. That's why people are very excited. Oh, SpaceX IPO, and also I was seeing this SpaceX IPO. निकला उसके बाद uh, he became a trillionaire. His net worth he became a trillionaire. Then now now he had his net worth jumped from 1 trillion. His net worth jumped $250 billion down. So which is around I think it was 750 Omega. So yeah, let's see इसमें क्या होता है अब आगे. हाँ तो अब रेड फ्लैग्स यही है. पहले हमको क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए. पहले तो टेक्नोलॉजी जो अभी बनी नहीं है स्टिल इन डेवलपमेंट. Betting on it is a gamble, I feel. Second is its unproven physics. Nobody has ever launched a 100-ton radiator at scale. कभी किसी ने करेंगे स्पेस में. तो कर भी पाया अगर हम $200 के लिए फिर वो ऊपर जाके कैसे काम करेगा नॉट. Precarious. What is this precarious? What does precarious means? Precarious मतलब क्या होगा? Not safe. Okay. Not safe financially. Not so safe financially. That is really weird. अब इसमें है क्या. XCI मैंने बताया बर्न कर रही है मनी. स्पाइस XCI बर्न कर रही है. स्टारशिप. हाँ, स्टारशिप तो डायरेक्टली पैसे लग ही रहे हैं उसमें क्योंकि बना रहे हैं टेक्नोलॉजी. और सारा पैसा आ रहा है स्टारलिंक से. तो XCI कितना बर्न कर रही है. एवरी every $1 XCI earn, it spend around $4 on it. So the rocket division burns, rocket वाली जो 3 billion burn कर रहे हैं. The entire ecosystem survives on Starlink. 63% profit margin, but अब कोई competitor आ गया. Amazon के ऊपर. The fuck is Amazon के ऊपर. Amazon इसमें भी आ गया क्या. प्रोजेक्ट हम लाइक लो और सैटेलाइट नेटवर्क. वाओ. वाओ. Amazon के ऊपर चाइनीज सैटेलाइट नेटवर्क कोई भी बैंड लग सकता है. कोई इनकम इतना कम होएगा बाकी सारी प्रोजेक्ट्स पे हिंडर करेगा वो. यही है कंक्लूजन. दैट इज ऑल. दैट वाज द फर्स्ट वीडियो फॉर माय चैनल. थैंक यू.